हेलो हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉली की रेडियो एक्टिव थ्योरी के बारे में। दैट हाउ डज जॉली हैज envisaged द origins ऑफ द माउंटेन्स। क्या कंसेप्ट्स हैं और क्या क्रिटिसिज्म है उसके। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स से लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द नेम जॉलीज माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। Now, before starting this theory, we must know the assumptions and the facts. Assumptions and facts that Joly has utilized for this theory. That Joly has utilized for this theory. Utilized for this theory. Let's start uh, learning these assumptions and facts one by one. So, पहला assumption क्या है? The first assumption is that the upper layer of the earth, that the upper layers of the earth, upper layers of the earth can be divided into two categories. One is the Sialic layer, and the other layer can be described as of Sima category. Sima layer. Sialic rocks are acidic, so less hard, more hard, and Sima rocks are basic and are less harder. No. Second, uh, the Sialic and Sima rocks are also different when it comes to density. Are different in density. So the average Sialic density given by Jolly was around 2.7 units, and average Sima density was given by him as 3 units. There is also third. There is also density stratification. So upper Sima layers have different density and the lower Sima layers have different density. Sima 1, Sima 2, Sima 2. Sima 2 is more denser than Sima 1. Upper layers are less denser and lower layers are more denser. Fourth, Sialic layers and the upper Sima are more radioactive than lower layers, than lower Sima. You will get a clear picture when I will make up the diagram, but right now let's brutally understand these 5 or 6 facts. And the fifth one is the heating of the earth takes place in two different layers. The upper layer is heated separately, the lower layer is heated separately. Separate heating. The upper layer consists of Sialic and upper Sima. Upper Sima is also known as upper stratum, and the lower Sima, also known as lower stratum. 6. The upper layers here in upper layers he means Sialic layers
and the upper stratum, which is upper sima, can move around the globe, can move over the earth under certain circumstances, can move over the earth, over the lower layers under certain circumstances, under certain circumstances, under the influence of gravity, tidal forces. This is the only fact which I don't find any explanation either in the book or on the internet. So this you have to mug up, that how there is no explanation on the mechanism, that how the upper layers move under the influence of gravity through tidal waves, through tidal forces. So let's mug it up, and everything apart from it is very conceptual. This is the only part in his theory which is factual. That is the mechanism of how the upper layers move under the influence of gravity under certain circumstances. तो देखते हैं कि जॉली इन फैक्ट्स को आप एक बार देख लीजिए फिर से, और यूजिंग दिस वी विल नाउ अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ जॉली. तो इस फैक्ट्स क्या है कि देयर आर टू upper layers of the earth, Sialic layer, Sima layer. Sialic and Sima rocks have different density. Sialic rocks are less dense, Sima rocks are more dense. There is density stratification. The upper Sima is less dense, the lower Sima is more dense. Uh, the next is the Sialic layers and upper layers are radioactive, more radioactive than the lower Sima, are more radioactive than the lower Sima, and the heating of the upper layers of the earth takes place in two separate ways. The Sialic and upper Sima get heated in a separate way, and the lower Sima get heated in a separate way. So now let's move on. And yes, the upper layers, which is Sialic layer, and the upper Sima layer, which is also known as upper substratum. Upper stratum can move under the influence of gravity under under certain circumstances. So let's move on to theory. Theory कहती क्या है? How he has utilized these facts to explain the mountain building. So let's start. So let me draw this diagram first. Like this. This is Sialic layer. This is upper stratum, or the upper Sima, and this is lower Sima, lower stratum. So this becomes the oceanic floor, and the Sialic layers become the continents. Yeah. Yeah. What happens is that initially there is earth, there is earth, there is earth, there is earth, and it is after its formation in the cosmos, it starts to cool down. But after some time, what happens is that radioactivity starts, and the earth begins to heat again. Now, as we have discussed earlier, there are two layers. One is this layer combined, which is Sialic and upper stratum, and the other layer is, this is layer 1, which is Sialic layers and the upper stratum, and this is layer 2, the lower stratum. Now these are two, both are heated in a different manner, both are heated separately, and moreover Sialic layers and the upper stratum are more radioactive, so they are heating faster.
If the lower stratum has a lower radioactivity, so it is heating. The heating is lower here. Now, since the upper layer, which consists of Sial and Sima, is heating faster and separately, and the lower layer is also heating separately, but the upper layer is heating faster. What happens is that it heats faster, and heats faster and creates condition that no heat can pass from this layer to the upper layer and can then dissipate into the universe in the space. Meaning, say if the upper layer is more hot and the lower layer is less hotter, what happens is that the heat from the lower level does not pass to the upper layers. So, and this has been shown by Joly through calculations that the boundary between this upper layer and the layer 2 has no temperature gradient. मतलब जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है और जो यहाँ टेम्परेचर है, both are same. So if there is no temperature gradient, no heat can pass. जो पिछला मैंने आपको जो पिछला मैंने बताया था आपको, ये जो पिछला कंसेप्ट बताया था, आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं और इसके थ्रू भी समझ सकते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ. दिस वॉज शोन बाय जॉली थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस that what happens is that there is no temperature gradient between the upper layers and the lower layers, uh, and therefore no heat passes from the lower layer to the upper layers and eventually dissipates into the space. This is because the upper layer heats faster because of radiation, more radiation. So there is no heat, so the heat is trapped in the layer 2, right? अच्छा, ये mathematical calculations है which were performed by Joly, but we are not interested those calculations. We are only interested in the conclusion. So there is no temperature gradient. The temperature is same at the boundary of both layers, and this is because even though the heat is uh, heat in the upper layer is dissipating into the space, but since the radioactivity is more, the upper layer is getting heated faster. And so what happens is that the temperature at this boundary and this boundary is same, and therefore there is no temperature gradient. And temperature जो होता है फिर उसके बाद इस लेयर से इस लेयर में पास, इस लेयर 2 से लेयर 1 में पास नहीं कर पाता क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, राइट? तो रीजन 1, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है. उसका कारण क्या है? क्योंकि इवन दो द लेयर 1 इज डिसिपेटिंग इट्स हीट इनटू द स्पेस, बट चूंकि रेडिएशन वहां ज्यादा है, इस कारण से देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट. अब लेयर 2 में क्या हो रहा है? हीट एक्यूमुलेट हो रही है. सो द लेयर 2 इज एक्यूमुलेटिंग हीट. Layer 2 is accumulating heat, so it melts. This is the lower stratum I'm talking about. This lower stratum, right? This is the layer I'm talking about. So it melts. What happens when it melts? Certain things happens. So layer 2 and layer 1. So when layer 2 melts, it expands. और उस कारण से जब ये expand होगा, तो expand होने के कारण the upper layers, which consist of sialic layers and sema layers, sialic plus sema layers, they will stretch and the radius of the earth will increase. Radius of earth will increase because it melts and then it expands, melts and expands. Layer 2. So the upper layer stretches out and the radius of the earth increases. The next thing happens is, since
द लोअर स्ट्रेटम जो है मेल्ट हो गया तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी. Density decreases because it is now in liquid state. So when density decreases, the sialic layers and the upper substratum now they take a dip. अब इसमें डूबते हैं. The upper stratum and the sialic layers now start dipping in the lower stratum because इसकी डेंसिटी तो डिक्रीज कर गई, इनकी वही रही, तो अब बायोन्सी इफेक्ट के कारण ये दोनों और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे डूबेंगे. So what happens now because of these two things? What happens? So let's draw that diagram again. So this is your sialic layer. This is your sema. This is upper substratum. So ये मेल्ट हो गया. Lower layer melts. Now once the lower layer melts and there is expansion and there is dipping of the sialic and the upper substratum, what happens is that, say this was the, say this was the original boundary, and when there is expansion, it expands, and now the boundary is this. क्योंकि expand हुआ ना, तो it stretches, and now the new layer is this, right? Or this layer also dips into the lower substratum, so it will be like this. This layer will be like this, right? तो जो gap आया ना यहाँ पे, this gap, it will be transgressed over by the ocean, and sediments will deposit in it, right, in this gap. Now, so this now acts as geosyncline. Now this now acts as geosyncline. Acha. So this is the phase when there is active melting and sedimentation is happening. What happens when the melting stops and the processes are reversed? So, and how these processes are reversed is also a matter of inquiry. So let's start. कि अब क्या होगा इसके आगे? So now this is your Sial, this is your Sema, this is. Now what happens is that this boundary has no temperature gradient, right? यहाँ पे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है नहीं, यहाँ मेल्टिंग हो चुकी है, ठीक. बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, राइट, से T1 है यहाँ पे और यहाँ T2 है, और T1 इज मोर देन T2 क्योंकि एट ए डेप्थ है तो हीट एक्यूमुलेट होगी, तो T1 इज ग्रेटर देन T2. नाउ व्हाट हैपेंस सिंस the lower stratum has melted, it will now break into this upper stratum. The melts try to break into the upper stratum and comes in contact with the layers that have temperature gradient. मतलब अगर वो if it these melt portion of this lower substratum now breaks into this upper stratum and comes in contact with layer, say layer 1, layer K, which has a different temperature than T1. So now there is an established temperature gradient. ठीक, पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं था, यहाँ इस बाउंड्री पे टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं था, इस वाली बाउंड्री पे. लेकिन जब एक बार क्या होगा, जो मेल्ट है प्रोट्रूड करके अपर स्ट्रेटम के ऐसी लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा, जिसके कारण से हीट विल नाउ स्टार्ट डिसिपेटिंग, राइट. सो नाउ हीट स्टार्ट्स डिसिपेटिंग. Moreover, what happens is that जहां जहां मेल्टिंग हुई है,
say if the melt acha the melts does not protrude in the sialic parts because sialic parts are harder, but something is required to cool the melt in this part as well. Melt must be cooled. This happens how? So this happens when uh, under the influence of gravity, under the influence of gravity, the upper layer starts moving. The layer 1, layer 2, the upper layer starts moving under the influence of gravity. तो जो सियालिक कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो मेल्ट था, this will also come in contact with the upper stratum, जहाँ पे it can protrude and gets cooled. राइट. सो टू थिंग्स आर हैपनिंग. पहला तो मेल्ट जो है प्रोट्यूट करके कूलर लेयर्स के कांटेक्ट में आ रहा है, कूलर लेयर्स के कांटेक्ट में आ रहा है. और दूसरा, चूंकि अपर लेयर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, द मेल्ट within the beneath the sialic parts are also getting cooled. सियालिक पार्ट्स वाले भी कूल हो रहे हैं क्योंकि the earth layer is moving under the influence of gravity. So this is how there is cooling taking place uh, after the heating has done its job. So now, अब उसके बाद क्या करना है? हाँ. So now the cooling has taken place. Now the cooling starts. So जब cooling start होगी, cooling start होने के बाद this will go up and the stretch, जो यहाँ stretch हुआ था ना, जो stretching हुई थी ये वाला, this will again come to its original position. Let's make it make the diagram again. तो पहले ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर स्ट्रेचिंग के कारण, स्ट्रेचिंग के कारण और ये नीचे गया. तो स्ट्रेचिंग के कारण, sorry, let me make it again. Next, so this is like this, this is like sialic part is like this. स्ट्रेचिंग के कारण स्ट्रेच हुआ और ये और नीचे आया. सो जो ये जो पोर्शन था ना, अब वापस से स्ट्रेचिंग जब खत्म होगी तो दिस हैज टू गो अप बिकॉज देयर इज नो स्पेस नाउ. ये ऊपर जाएगा और ये स्ट्रेच होके, और ये स्ट्रेचिंग इसकी खत्म होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होके वापस आएगा. तो जो सेडिमेंट्स है दे नाउ आर कंप्रेस्ड एंड दे हैव टू गो अप. नाउ दिस इज हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू जॉली. राइट. तो सेडिमेंट इसके ऊपर आने से क्या होगा, इसके ऊपर आने से क्या होगा, और स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, द सी विल रिग्रेस and at the same time the sediments here will get compressed and start into formation and start the formation of mountains. So this is how mountains are formed according to Joly. कुछ कुछ चीज़ों जैसे हमने फैक्ट्स का कुछ पीछे इस्तेमाल किया था. फॉर एग्जांपल द सियालिक एंड द अपर स्ट्रेटम, the sialic parts and the upper stratum, the sialic parts and the upper stratum, इनकी डेंसिटी चूंकि कम होती है, हमने पहले ही पढ़ा था फैक्चुअल बातें जब हम लोग कर रहे थे, तो इसके कारण से डिप होता है. और चूंकि अपर लेयर्स की रेडियोएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा हीट होते हैं और इसीलिए सेपरेटली हीट होते हैं और इस कारण से टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता है. सो जो हमने पीछे फैक्ट्स का इस्तेमाल किया था उसका इस्तेमाल करके हमने देखा कि how has Joly explained the formation of mountains, right? So this is the concept that Joly has used. This is the concept that Joly has used in the formation of mountains. That there are there is layer 1 which consists of sialic and sima rocks. There is layer 2 which is also known as lower stratum, which is consists of basic rocks or sima rocks, and the upper layer is more radioactive. It is also less dense, so it floats on the lower layer.
since it is more radioactive, it heats faster and creates conditions so that there is no temperature gradient between layer 1 and layer 2. So no heat passes, and after no heat passes, there is heat accumulation in the lower layers. The lower layer melts, and after the lower layer melts, the sialic parts and the upper stratum, which are less dense than the lower stratum. सियालिक तो है ही लेस डेंस, और अपर स्टेटम में भी चूंकि डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन होता है तो अपर लेयर जो होती हैं वो कम डेंस होती हैं. सो दे बोथ टेक ए डिप इनटू द लोअर स्टेटम, और इसके कारण से क्या होता है, जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है. वो मैंने बता दिया आपको डायग्राम से कैसे जियोसिंक्लाइन बनते हैं. उसके बाद कूलिंग होती है. कूलिंग कैसे होती है, जो मेल्ट हो गया है लोअर स्टेटम वो प्रोट्रूड करता है अपर स्टेटम में, राइट, क्योंकि अपर स्ट्रेटम इज लेस हार्डर देन सियालिक रॉक्स. तो जब अपर स्ट्रेटम में प्रोट्रूड करता है और इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द layers that are cooler, so there is now temperature, now the heat passes through the upper layers and dissipates into the space. तो ये लोअर अपर स्ट्रेटम में ही प्रोट्रूजन होता है, सियालिक लेयर्स में प्रोट्रूजन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि सियालिक लेयर्स आर हार्डर. मैंने बताया था ना आपको, ऐसे बताया था आपको. तो जो लोअर लेयर से जो प्रोट्रूजन हो रहा था वो अपर स्ट्रेटम में हो रहा था, सियालिक लेयर्स में नहीं हो रहा था, क्योंकि सियालिक लेयर्स आर हार्डर. हमने पढ़ा था ना कि एसिडिक रॉक्स आर मोर हार्डर देन बेसिक रॉक्स. उसी का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं आपको ये बता रहा हूँ. एंड सी, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग फ्रॉम माय ओन एस, right? Everything that I have told you is somewhere given in the book. So now एसिडिक और बेसिक हमने देख लिया. हाँ, तो उसके बाद कूलिंग होती है. कूलिंग प्रोट्रूजन के कारण होती है, जब व्हेन द मेल्ट्स कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलर लेयर्स इन द अपर स्ट्रेटम. एंड अच्छा, सियालिक लेयर्स के नीचे भी जो मेल्टिंग हुई है वो कैसे कूल होगी. इट हैपेंस व्हेन द अपर लेयर्स रोटेट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड द मेल्ट बीनीथ द सियालिक लेयर्स कम्स इन कांटेक्ट विद द अपर स्ट्रेटम. वहां पे भी फिर प्रोट्रूजन होगा, वहां पे भी कूलिंग होगी. तो इस कारण से जब कूलिंग होगी तो स्ट्रेचिंग जो है, जो अर्थ की स्ट्रेचिंग हुई है वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा. और जो डिप हुआ था, डिप के कारण जो सेडिमेंट्स पानी के अंदर आ गए थे वो ऊपर चले जाएंगे जब चीजें नॉर्मल होंगी तब. when there will be rebound of the Sialic continents and the upper stratum, the sediments will go up as I have shown in the diagram, और कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके कारण से सेडिमेंट्स विल बी अपलिफ्टेड इनटू माउंटेन्स. अच्छा, हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है जॉली की थ्योरी के बारे में, जॉली की रेडियोएक्टिव थ्योरी के बारे में. रेडियोएक्टिव थ्योरी के बारे में क्रिटिसिज्म क्या क्या है. तो पहला क्रिटिसिज्म है, मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, दे गेट क्रश्ड and they come out of the ocean when there is retreat of the ocean, and then they get uploaded into mountains. तो इसका क्रिटिसिज्म ये है, अगर राइट साइड में ये हो रहा है तो लेफ्ट साइड में भी तो होना चाहिए सेम. तो thus if we follow the theory of Jolly, mountains should be on both side of the continents. इधर भी mountains होने चाहिए, इधर भी mountains होना चाहिए. This is not the case. पहला क्रिटिसिज्म. ठीक. दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, दूसरा क्रिटिसिज्म है द ग्रेविटी थ्योरी, द ग्रेविटी एंड टाइडल फोर्स कंसेप्ट. टाइडल फोर्स कंसेप्ट का जो इस्तेमाल किया गया है, दैट इज यूज्ड बाय जॉली, is no longer relevant, is false. There is no such thing as the upper layers moving over the melted seema. तीसरा तीसरा ये है कि हाँ, the mathematical calculations that show that there is no temperature gradient between layer 1 and layer 2 have been proven to be false by Jeffrey. Have been proven to be false by Jeffrey. Proven to be false by Jeffrey. तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, फैक्ट्स पढ़ लिए, assumptions पढ़ लिए, और कंसेप्ट पढ़ लिया, और क्रिटिसिज्म पढ़ लिए. So this is your theory of Jolly. It is
given in the book, but it is in very bookish language. So I have brought you this explanation. It may not be perfect, but it will clear some of your concepts. So thank you for your cooperation. Thank you for seeing me, and please subscribe if you like my channel. I can bring you more lectures like this, which will be only based on concepts and no money. Thank you. Thank you. Bye bye. We will meet later.